Most people come to YouTube searching for confidence. They type things like how to be confident, how to boost confidence, how to stop self-doubt. But I want to tell you something very clearly at the beginning of this video, that you don't lack confidence. You lack stability under pressure. जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आप अपना कंफर्ट लूज करते हो और आप कॉन्फिडेंस भी लूज कर देते हो. So it's not about confidence, it's about comfort. I'm not going to motivate you in this video, I'm not going to hype you, I'm going to explain confidence the way it works, especially in real life, in professional life, in high pressure situations. So let's start with why confidence feels unreliable for most people. One day you are confident, you are capable, you are clear, you speak very well. Next day, nothing external has changed, but internally you feel unsure, hesitant, and overthinking everything. Same person, same knowledge, same skills. Then what changed? Internal regulations has changed. And this is where most people misunderstand confidence. उनको लगता है speaking loud, being bold is confidence. But confidence looks calm. Calm means your mind is regulated, and regulation always beat motivation. अगर अंडर प्रेशर आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो. इसका मतलब ये है यू नेवर ट्रेन्ड योर माइंड हाउ टू स्टे काम एंड स्टेडी अंडर प्रेशर व्हेन कंफर्ट इज गॉन. बहुत लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस इज अ फीलिंग, बट दैट्स अ मिस्टेक. Feelings are unstable by nature. If confidence depends on feelings, then pressure, feedback, comparison, one uncomfortable situation will destroy your confidence. It will destroy everything. That's why people say, I get nervous in front of people. I lose my confidence in meetings. I know what to say, but I cannot express it. Why? It's not knowledge problem. It's how your mind works, your mind behaves under pressure. And here's something very important. Pressure doesn't break people, it reveals them. When pressure shows up, people don't suddenly change or behave different. They behave who they actually are. You will see some people will start talking faster. Some people please. Some people over explain. Some people freeze. Some people suddenly behave very confident under pressure. ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं है, ये आपका नर्वस सिस्टम है सर्चिंग फॉर सेफ्टी अंडर प्रेशर, ये सारी चीज़ें करके. सो लेट मी से दिस वेरी क्लियरली. कॉन्फिडेंस इज नॉट एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस इज नॉट एनर्जी, कॉन्फिडेंस इज नॉट हाइप. Confidence is control. Control over your feelings, control over your thoughts, control over your words, and control over your reactions. That's why calm people perceived as more confident even if they say little. इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को नॉलेज ज़्यादा है. इसका मतलब ये है उनका इंटरनल स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है. आप कॉन्फिडेंट तब होते हो जब आप इस चीज़ को लेके पैनिक नहीं करते, हाउ अदर पीपल आर perceiving you, how other people are judging you. Confidence कोई परफॉर्मेंस नहीं है. Confidence is a training जो आपको अपने माइंड को देनी होती है. So where does real confidence come from? It comes from self-trust, and self-trust comes from only one thing: doing what you said you would do. Hear it again. Doing what you said you would do, especially when your emotions don't cooperate. Every time you're avoiding something uncomfortable, a difficult conversation, over justifying yourself, changing yourself or your behavior to be liked by people, your brain learns only one thing. It learns, I cannot rely on myself under pressure, and your confidence weakens. On the other hand, every time you pause instead of reacting, you speak clearly instead of over explaining, you show up even if your motivation is low, your brain builds evidence. Confidence बड़े moments पे नहीं आता. Confidence is boring, और ये repeated behavior है आपके brain का. That's why disciplined people look confident even when they are not trying, because उनके brain के पास proof है that they have done things that they said they would do. Now let me be very clear and practical. If you want to build confidence, stop asking, how do I feel confident? Instead, train your mind for these three things.
ट्रेन योर पेस, स्लो डाउन बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग। इससे लोग आप पे रिलाई करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपको कॉन्फिडेंट कैसे लगना है इवन when you are slowing down your pace while speaking. Train your pause. Before responding in rush, slow down and pause for a second. क्योंकि जब आप वो pause लेते हो वो आपको help करता है right decision लेने में before you react. Third है train your follow through. मतलब do what you said you would do. कीप दो स्मॉल प्रोमिसेस टू योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। आपको पहले पहले ये बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा बट कंफर्ट में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज़ समथिंग यू बिल्ड। कॉन्फिडेंस कम्स विद क्लैरिटी एंड सेल्फ ट्रस्ट। अगर आप खुद पे ट्रस्ट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, पर उसके लिए आपके माइंड को प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ है जो आप खुद से प्रॉमिस करते हो, यू हैव टू डिलीवर इट। क्योंकि अगर आप खुद से प्रॉमिस नहीं रख सकते तो आप किसी से प्रॉमिस नहीं रख सकते, तो आप किसी के सामने कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिस पे आप वीडियोस देखना चाहते हो व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। मैं उस पर और वीडियोस बनाऊंगी।